Hello friends, namaskar दोस्तों, very warm welcome to global market equity market discussion with SD. मैं हूं SD शानंद दास, multi asset trading and investment specialist. Very happy new year to all of you. Let me start with a disclaimer that you should never ever listen to anyone in your trading decision. आप मेथड सीख सकते हो, द वे टू डू इट, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, बट व्हेन इट कम्स टू अल्टीमेट trade decision making, it has to be based on you have some method, you have some rule or something जब इस चीज के बेसिस पे आप ये ट्रेड लेते हो. किसी दूसरे का सुन के ट्रेड करना बहुत ही खराब चीज होता है एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ लूजिंग द मनी. आपका पूरा पैसा आप खो सकते हो. सो डोंट डू दिस. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड 2025. हमारे रूल नंबर 1. व्हाट इज रूल नंबर 1? दैट विल नॉट ट्रेड लिसनिंग टू अदर्स. सो व्हाट इज दिस वीडियो? ये वीडियो बेसिकली मेरा एक वीडियो लॉग है एंड ऑल्सो टू हेल्प द लर्नर जो मेरे फाउंटेन ऑफ गोल्ड यानी रेनबो सेटअप का इस्तेमाल करते उनके लिए है ये. तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं देखने वाला हूं कि ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट का हालत, मेन इंडेक्स को हम लोग देखने वाले हैं थ्रू एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. बट बिफोर हम लोग वो करें, व्हाट वी वांट टू डू इज बेसिकली चेक द मार्केट रिस्क. So what I will do, I'll apply the S&P 500 and उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे इंडिकेटर्स में जाके इनवाइट ओनली SD रेनबो वेव V2. V2 आपको देगा SD रेनबो रिस्क मास्टर. सो रिस्क मास्टर वीकली चार्ट में दिखा रहा है इट इज मच सेफर. द मार्केट लेवल ऑफ रिस्क हैज कम डाउन. हाउएवर, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, वी आर इन ए रिसेशनरी साइकिल. And I think we are getting closer to that tipping point, risk turnaround getting closer. कि turnaround जो point है उसके आसपास हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे. सो ये एक रिस्क है जो हमारे ऊपर होवर कर रहा है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क, not the biggest risk. I think we are also part of long term cycle which is not included in this risk. So this recession, this downturn and higher interest rates, these are major headwinds coming for 2025. Now, let me change the risk master. Let's go to daily. Daily chart में इसको देखते हैं. And daily chart में, let's make it bigger. Daily chart में भी safe risk relatively safer दिखा रहा है. Except for the recession risk, the market-based measure of risk, they are significantly down. So overall थोड़ा positive mood बन रहा है इक्विटी के लिए. However, ये green होना सिर्फ जरूरी नहीं है. After the green, we need a beautiful Dow structure breakout. मतलब higher high, higher low अगर breakout होगा तब जाके हम लोग समझ पाएंगे yes, this is really come down. बट ये डेली का सेफ हो जाना इज वेरी गुड. फिर हम लोग देख रहे हैं मोर शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए, दैट इज 125 मिनट या 2 आवर चार्ट भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. 125 मिनट चार्ट में भी सेफ्टी ही नजर आ रहा है. इसके बाद हम लोग इस रिस्क मास्टर को अप्लाई करेंगे थोड़ा निफ्टी के ऊपर. ये हम लोग ओवरऑल S&P के ऊपर, S&P के टाइम जोन से देख लिए व्हाट इज द पिक्चर. निफ्टी के टाइम जोन से अगर देख रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ risk is little slightly on the higher side, not significantly high in 125 minutes. It's yellow, red is the warning. Let's look at the daily chart. निफ्टी के ऊपर लगा के देख रहे हैं, so it is fully calm down मोड में है. सो मार्केट एक रिकवरी, एक नाइस राइज के मोड में है. ओवरऑल रिस्क रिमेन्स lower. However, the recession risk, the recession tipping point is getting closer and closer. Now with this, let's come back. Risk master is to tell us about the risk. However, asset master will help us to remain in an asset class. और हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द इंडेक्स. देखेंगे तो इंडेक्स हम लोग अप्लाई किए एंड इंडेक्स के सेटिंग्स में we want S&P, Dow, this is Nifty 500,
इसको चेंज करके हम लोग नैस्डैक कर लेंगे, S&P डाउ नैस्डैक। नैस्डैक के बाद हम लोग चले जाएंगे रसल, यूएस का रसल 2000, दैट इज स्मॉल मिड कैप। देन विल गो टू यूरोप। यूरोप में ब्लू चिप इंडेक्स पहले, यूरो स्टॉक्स। फिर हम लोग यूरोप में सिलेक्ट करेंगे MIB, मीन्स इटली, इटली का इंडेक्स। देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे इटली के बाद स्पेन, स्पेन के बाद यूके यानी लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो लेट्स डू यूके 100। फिर हम लोग करेंगे जर्मनी, जर्मन का डैक्स इज इंपॉर्टेंट, जर्मन डैक्स इज डन। बाकी के तीन को हम लोग डालेंगे एशिया का जो मेन है, एशिया में जो मेन मार्केट है दैट इज चाइना। वी वांट टू हैव इंडिया, इंडिया पसंद करेंगे, निफ्टी 500। and on the last quadrant we can hang out with the Nikkei. सो ये रहे ग्लोबल मार्केट का पिक्चर। अगर ग्लोबल मार्केट का पिक्चर पहले थोड़ा वीकली चार्ट में देखते हैं, एंड लेट्स टेक गो टू फर्स्ट। पहले ग्लोबल मार्केट का जो ETF है, ऑफ द होल ग्लोबल मार्केट ETF, SPGM। SPGM क्या बता रहा है? इट इज गिविंग आउट अ सेल सिग्नल इन द वीकली चार्ट दैट इज एक्चुअली अ बैड साइन। नाउ सेल ट्रेड का जीतने का प्रोबेबिलिटी आप देखिए ऊपर के मीटर पे 30% अराउंड। मतलब ये जो सेल सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट इज डेफिनेटली नॉट इन अ बाई मोड, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड ये सेल सिग्नल लास्ट टाइम आया था अराउंड अगस्त, एंड वंस अगेन कमिंग नाउ। नाउ कैन इट टर्न अराउंड? दैट विल बी द की लुक आउट। वीकली चार्ट में मुझे दिख रहा है S&P डाउ आर फॉलिंग मोड, Nasdaq is rising mode, small mid cap Russell falling mode, Euro stocks blue chip index rising, Italy falling, Spain falling, London on the rise, Germany neutral, China falling, Nifty falling, whereas Japanese Nikkei is on the rise. अब इसको हम लोग डेली चार्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेली चार्ट में इट इज अंडर बियरिश प्रेशर, क्लियरली दिख रहा है SPGM in under bearish pressure, and measured it except for some of the European index which were battered, and Nifty, the US indices are falling down along with Nikkei. Since नीचे का मीटर हम लोग पूरा देख लिए in the weekly and the daily chart, now let me go remove the नीचे का टेबल, strength टेबल ऑफ कर दिया। Now we are taking look at कि इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स में क्या चल रहा है। MME is emerging market index, and it has been in a more bearish mode, some comeback happening in the near term, but not enough to go bullish. तो ओवरऑल SPGM यानी ग्लोबल इक्विटी मार्केट का पिक्चर एज वेल एज इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज का पिक्चर अगर वीकली चार्ट चलिए देखते हैं, none of them are looking very bright. So overall broad-based market bullishness may not come, whereas stock-specific bullish action likely to continue. Next हम लोग देख रहे हैं यूरोपियन इंडेक्स। फर्स्ट या लेट्स यूरोप करेंगे, या यूरोप भी पहले करते हैं, उसके बाद एशिया एंड अमेरिका कर लेंगे। फर्स्ट वी आर लुकिंग एट नेदरलैंड्स, हैज बीन अंडर बियरिश प्रेशर। यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, सो सम कमबैक इज पॉसिबल, but currently not in a bullish mode. It is weekly chart clearly in bearish mode. Now daily chart में थोड़ा bullishness दिख रहा है, थोड़ा comeback, but is it super to buy right now? I don't think so. We are not yet there to buy the market. Next हम लोग देख रहे हैं इटली।
Italy, what I'm seeing is Italy has going up. Correction दे रहा है in the near term, but picture अगर देखा जाए in the weekly chart, it is more of a consolidation हो रहा है with bull bear mix के साथ, not really very bullish इटली का इंडेक्स. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्पेन का इंडेक्स आईबेक्स 35, उसका नॉट एग्जैक्टली द इंडेक्स नहीं देख रहे हैं, उसका सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं. स्पेन भी कंसोलिडेशन फेज में है. रादर आई थिंक ये फेज कैन कंटिन्यू, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत बुलिश नहीं दिख रहा है हेडिंग इनटू 2025. फ्रांस का इंडेक्स, फ्रांस एक्चुअली आई एम बियरिश, इट इज प्रीटी बियरिश. आई थिंक उनका जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है दैट इज ब्रूइंग इन फ्रांस, उनका जो डेट है, आई थिंक दिस इज not healthy for the economy, but and I think it will impact France shares, France listed shares as well, and they can go for much bigger decline. Around say 400 around points ये तो गिर सकता ही है. So 5 to 6% decline is very possible. This one is FTSE. It is consolidating almost since May. ओवरऑल कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, एक कंसोलिडेशन फेज में ये रह गया. सिमिलर पिक्चर आपको दिखेगा फ्रॉम द यूरो स्टॉक्स, यूरोपियन ब्लू चिप इंडेक्स, ये भी इन द रेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जर्मनी को. This has done relatively better compared to other European index. For example, if we type Eurostoxx 50 and enter, we will be able to see that German stocks are the one that has significantly outperformed the European main benchmark index. ब्लू चिप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आई थिंक इट हैज डन वेल. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूरोप 600 स्टॉक का इंडेक्स है, एंड आई थिंक इट इज समवॉट रेंजिंग, नॉट वेरी बुलिश एकदम नहीं दिख रहा. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, विल गो टू एशिया. एशिया में ऑफ कोर्स इंडिया विल, सो वी आर इंटरेस्टेड इन एशिया. लेट्स लुक एट ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट. ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशेनिया हम लोग देख रहे हैं. लेटेस्ट थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है. ओवरऑल द इंडेक्स हैव बीन बुलिश. लेटेस्ट राउंड में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आउट चल रहा है. इन द डेली चार्ट अगर देखेंगे रिसेंट कमबैक हो रहा है. हो सके 2025 जनवरी से ग्रेजुअल कमबैक रहे, बट लास्ट फेज ऑफ द ईयर हैज नॉट बीन वेल फॉर द इंडिसेस. तो नजर रहेगा 2025 पे वेदर दे आर एबल टू कम बैक और नॉट. अब देख रहे हैं न्यूजीलैंड. इट हैज डन ब्रॉडली वेल, ग्रेजुअली जिगजैग मैनर में ऊपर जा चुका है. वंस अगेन इंडिविजुअल स्टॉक विल बी बेटर देन द ओवरऑल न्यूजीलैंड इंडेक्स राइट नाउ. जापान हैज बीन कंसोलिडेटिंग. आई थिंक जापान को कोई लॉन्ग करना, जापान का इट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप, बट अगर कोई जापान को लॉन्ग कर रहा है फ्रॉम से इंडिया और यूएस, हमें थोड़ा करेंसी का ध्यान रखना होगा, और उसके लिए हम लोग HEWJ यानी हेज्ड करेंसी को हेज करके हम लोग जापान में पोजीशन ले सकते हैं. तो इसमें करेंसी का इंपैक्ट रहेगा नहीं. सो जापान में इन्वेस्ट करना है तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट द करेंसी. ये जो स्टॉक मार्केट है इट इज बैटर्ड, और लग रहा है और भी खराब दिन आने वाले इनके लिए, क्योंकि साउथ कोरिया में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उसके साथ साथ करेंसी वीकेन हो रहा है, तो उन लोग का सिचुएशन इज नॉट वेल. साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने अचानक मार्शल रूल डिक्लेयर किया था, फिर पार्लियामेंट आउस्टेड द प्रेसिडेंट को निकाल दिया. सो लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल, instability is going on, increasing,
South Korea is becoming more unstable. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चाइना. चाइना बहुत इंटरेस्टिंग है कि लास्ट मतलब दिस वीक to yesterday, China once again turned towards this bearishness. Though the candle is pretty small, but लग रहा है it is turning for more bearish. अगर ऐसा situation है, China can easily come down to this flat line, that is 12,000, 13,000 area. That will be another say 20% or decline. So China remains trapped. Whether what will be the Trump policy. कुछ अपॉर्चुनिटीज तो चाइना में जरूर मिलेंगे, जैसे वी हैड अ रन विद केसी आरएलएक्स, बट करंटली ओवरऑल इंडेक्स इज नॉट गुड इन आइदर चाइना और इन हांगकांग. Rather, the market that has done extremely well has been Singapore. Recently consolidate कर रहा है थोड़ा बहुत, और अगर डेली चार्ट देखेंगे तो डाउन भी हो रहा है. बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखिए, सिंगापुर हैज डन एक्सट्रीमली वेल. अगर अपने मार्केट के कंपैरिजन में देखेंगे, CNX 500, you can see that significant outperformance हुआ है lately from Singapore, and Singapore का currency has appreciated against Indian rupee, so that's another positive impact for Singaporeans stock investors. अब हम लोग आ जा रहे हैं हमारे इंडेक्स पे, दैट इज द निफ्टी 500. एक डाइवर्जेंस दिख रहा है इन द वीकली चार्ट विच कैन बी बुलिश गोइंग फॉरवर्ड. बियरिश प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो गया है. वी डोंट हैव अ बाई सिग्नल येट, बट बैकग्राउंड येलो दिखा रहा है कि बियरिश प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो रहा है. अगर डेली चार्ट में आ जाते हैं, डेली चार्ट लेट्स लुक एट क्या बता क्या रहा है डेली चार्ट. It is giving out a first buy signal. It did. Now this is positive. ये अपना जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस किए थे, इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बायर्स विन. बायर को जीतने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुआ है, and it may follow this path. This is the main resistance, come down and finally either break here, or if it is strong it can break this flat line, but तब जाके ये माउंटेन टॉप लेवल के आसपास रुकने वाला है, and again come down. So buy side different probabilities currently exist कर रहा है, and sell side का जो probability था कि going up and going down, this has for now diminished. ये probabilistic path अभी उतना follow नहीं होगा. The more likely to be this upside probabilistic path. So Nifty 500 stock wise turning a bit bullish, but it is significantly bullish? Probably not yet. A lot of resistance coming up. So rather than buy breakout chance, buy supports can be more useful. And lastly, हम लोग देख रहे हैं American indices को. American indices S&P 500 latest round पे sell off face किया, and it is challenging a certain very important level, and ऊपर में अब क्या होगा, 6,000 एक resistance बन चुका है. Now it can break even lower and drops towards 5,800. I hope that does not happen that much, but it is a possibility we can't deny. Similarly, if it turning bearish in weekly chart, that means S&P can drop towards 5,577. That means another 6 to 8% decline in S&P 500 remains very much possible. और अगर S&P डिक्लाइन हो रहा है, साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी के ऊपर भी डाउनसाइड प्रेशर आने वाला है. Dow has been very bearish. It has reaching important level 42,400, and in the worst case, of course, it can go towards empty line and then bounce back. Next हम लोग देख रहे हैं Nasdaq, which is turning bearish now, but not bearish yet, rather neutral है. बुल बियर का फाइट चल रहा है. ये मिक्स कैंडल दिखा रहा है बुल बियर का फाइट. बैकग्राउंड येलो मतलब शॉर्ट ट्रेंड न्यूट्रल हो चुका है.
तो समराइज किया जाए, ओवरऑल इफ आई समराइज, आई एम नॉट सीइंग वेरी बुलिश मूव इन इक्विटीज. Some segments, some stocks could be firing up, but overall equities का हालत सही नहीं है. They are either consolidating, like we saw in case of Europe, or they are reversing, like we are seeing in case of American indices, or they are steadily going down, like we have seen South Korean index. And where we stand, we are more likely seeing a comeback. The comeback is not strong yet. It is the buy support chance that are likely to be better in terms of risk. तो ओवरऑल ये रहा इक्विटी मार्केट का सिचुएशन. बट जैसे रिस्क मास्टर से हम लोग देखें, ओवरऑल मार्केट रिस्क थोड़ा डिमिनिश हुआ है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी गोइंग अहेड equities are going to make a comeback. So that's all, friends. Thank you so much for listening to this global equity market. So best wishes to all of you. Until next time.